Congress. So let's ask Dr. Surena Malhotra. She is with us right now. Dr. Malhotra, very good evening, ma'am. Yes, good evening. Namaste. नमस्कार मैम, नमस्कार नमस्कार. तो अभी जो शरद पवार जी को अपना विरोधी समझते हैं, कुछ दिनों पहले तक अपना दोस्त समझते थे, अब वो कह रहे हैं शरद पवार जी के एनसीपी की, यानी शरद चंद्र पवार एनसीपी की एक भी सीट नहीं आएगी पूरे महाराष्ट्र में. ऐसे तो हो ही नहीं सकता. इसकी वजह से शरद पवार जी बात कर रहे हैं कि जो रीजनल पार्टीज हैं वो कांग्रेस में मर्ज कर जाएंगी. डॉक्टर मल्होत्रा बताएं प्लीज. पवार साहब ने ऐसे बोला कि ये पार्टी है जो मतलब जो सब साथ में अभी लड़ रहे हैं, दे कैन सी दैट सब पार्टियों का मुद्दा एक ही है, लोगों के लिए काम करना चाह रहे हैं, सेक्युलरिज्म के लिए सब लोग साथ जुड़े हैं. बोले इतना साथ आना पहले देखा नहीं होगा. जो मतलब अच्छी बात है कि जो इतने टुगेदरनेस इज सो एविडेंट. सो इसी प्रकार से ये बात हो रही थी. इसमें ऐसा नहीं है कि सब पार्टियां ज्वाइन होगी, एक दूसरे के साथ मर्ज होगी और या तो कि सीट्स आने वाली नहीं है. इनफैक्ट दिस इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट. It doesn't mean that everybody is going to join, but join in the sense they're going to come together. उनका merge in the sense कि जो विचार है, और ये सुप्रिया ताई ने भी क्लियर कर लिया कि ये वैचारिक तौर पे जो merging of विचार है, ये बात हो रही थी. इसका मतलब अलग लगाया गया, लोगों ने उसका अलग लगाया गया मतलब. In fact, it was a very positive statement that all of. So it's a merger of ideas. Yes, exactly. It's a merger of ideas. All right. That is You know, they are accusing Pawar Saab that Pawar Saab's cherished dream of becoming the Prime Minister will not happen if he remains isolated with NCP Sharad Pawar ji. If he merges with the Congress, there is a leadership crisis within the Congress, and Pawar Saab could be accepted as a leader, as a Prime Minister candidate if India Alliance wins in 2024. Now, is it that Pawar Saab ka uncherished dream of becoming the Prime Minister might be fulfilled if these things happen, Dr. Malhotra? If it gets fulfilled, we are very happy about it, and everybody would want Pawar Sahab because उनको इतना experience है और सबके मतलब पितामह बोल रहे हैं हम लोग. But वो उन्होंने तो काफी टाइम बोला कि I don't think he wants to be the PM, but then whatever that is their all decision, जो भी होगा. क्योंकि पहले अभी बीच में तो दूसरी बात भी हो रही थी, राहुल गांधी की भी बात हो रही थी. तो आई थिंक ये सब चीजें जो है वो आगे चल के डिसाइड होंगे. पहले तो मेन है कि हमें बीजेपी को वहां से हटाना है. बाद में ये सब चीजें जो ऊपर के जो हमारे सीनियर नेता है वो सब डिसाइड करेंगे. हाउ डू यू सी सुप्रिया सुले जी ने आज भी कंप्लेन किया है. शी इज टॉक्ड अबाउट सम रैंडम फायरिंग इंसिडेंट इन बारामती. She said some hooligans fired from a gun in the air where Baramati is concerned. She complained to the election commission earlier, third phase elections. Dattatreya Bharane, Ajit Pawar MLA manhandling, violently party workers of NCP Sharad Pawar group. Rohit Pawar ji giving proof to the election commission about Ajit Pawar ji using two banks which is the cooperative society which is under his control, issuing passbooks for bogus voting. Now these are serious charges. Supriya Sule ji, Rohit Pawar ji, today the firing incident, videos of Dattatreya Bharane, the MLA Ajit Pawar ji, violent methods being used. Do you think state machinery and the central machinery has been used to contain Sharad Pawar Saab and Supriya Sule ji? How do you see that? Yes, there are so many evidences are coming out. Rohit Pawar ji has given so many evidences, and we also saw the video of the Dattatreya Bharane ji. He's talking something very arrogantly or whatever with the people, the voters, and this firing incident. So whatever it is, दड़पशाही जो वोटर्स है उनके ऊपर, लोगों के ऊपर दड़पशाही का तो प्रयोग हो ही रहा है. अभी ये सीरियस बातें हैं. जैसे आपने बताया कि जैसे बैंक भी खुली थी लेट नाइट तक. आई थिंक बैंक के ऊपर सब एक्शन शायद उन्होंने लिया है, बट ये सब चीजों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए. ये बातें तो गलत है ना. सुप्रिया ताई हमेशा बोली थी कि जो भी लड़ाई हो वो वैचारिक तौर पे होनी चाहिए. तो ये तो मतलब जो इज्जत की बात और ये और वहां की गलत चीजें यूज हो रही है. तो इलेक्शन कमीशन शुड टेक एक्शन ऑन ऑल दिस थिंग्स. The most unfortunate thing. You think that yes, Sam Pitroda wala issue
which Prime Minister Modi बार-बार highlight कर रहा है कि the Congress and its allies want to जो constitution है, संविधान जो provide किया है, they want to destroy the very fabric by disintegrating the entire ethos of India. जो कल कहा कि ईस्ट वाले चाइनीज दिखते हैं, नॉर्थ वाले व्हाइट दिखते हैं, अरब वेस्ट वाले दिखते हैं और साउथ वाले अफ्रीकन दिखते हैं. तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की जो बातें आए, इज इट गोइंग टू अफेक्ट योर चांसेस? बिकॉज Sam Pitroda, definitely he's resigned, Congress has accepted the resignation, but is the stamp already on the India alliance that you believe in the disintegration of the country on racial discrimination? Certainly not. I mean, how can भारत जोड़ो यात्रा करने वाले हमारे पवार साहब के जैसे सेक्युलर नेता जो है, सुप्रिया ते जैसे नेता है, तो वो भारत को डिसइंटीग्रेट करना चाहेंगे? ये तो मतलब एब्सोल्युटली क्या बोलते हैं ना कि कुछ भी बात कहने वाली बात है. Maybe Sam Pitroda, as you know, that okay, he has resigned. We don't know whose script he is reading. We don't know who has given him the script which he is reading. You know, so ऐसे हो ही नहीं सकता. आप पहले से देखिए, जो इंडिया अलायंस के जो पक्ष है, उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं किया. इनफैक्ट उन्होंने सबको साथ में लेके, और यही तो सब लोग साथ में आ गए हैं कि उनको संविधान बचाना है, उनको सबको साथ में रखना है, हिंदू मुस्लिम भेदभाव नहीं करना है. तो और we believe that India is together, and it is amazing how India, so many small places, states are together, and we have हमें उस बात का तो हमेशा गर्व है. तो ये तो बहुत ही गलत चीज कोई ये इलेक्शन में ये सब. But to be very frank with you, ma'am, yes. I don't think Sam Pitroda meant it in a derogatory sense. What he was trying to say, and it all went wrong because this is the election season. What he was trying to tell everybody was that India is a continent in itself. Yeah. We have people who look like white Caucasians, we have people who look like Chinese, we have people who look like Africans, we also have people who look like Arabs. So India is a microcosm of the entire world. That's what he was trying to say. But what happened was, this being the election season, the BJP just picked up that thing and said that these guys are racist. और उसके बाद तो मोदी जी ने ये कह दिया कि वो द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ इसलिए थे क्योंकि उनकी चमड़ी भी काली है, इसलिए उनके खिलाफ थे. What I'm trying to say is that perhaps these things could be avoided at this time. ये सैम पिट्रोडा साहब को जैसे आपने कहा, क्या जरूरत पड़ गई अभी ये बोलने की, मुझे समझ में नहीं आ रहा. Maybe he meant it, as you said, maybe he meant it in a better, good way. But then, as usual, Modi ji और BJP, as usual, and especially when they know कि उनको votes मिल नहीं रहे हैं, थर्ड फेज के बाद भी उनको they are thinking that हाँ, जो जितने वोट आने चाहिए थे उतने नहीं मिल रहे हैं. They resort to all these different tactics. They, as you're seeing, that उनकी बातें कितनी चेंज होती रहती है. अभी तो थोड़े मुस्लिम के लिए अपनी सहानुभूति दिखा रहे हैं. जी, दिखा रहे हैं. हाँ, this is all the way. These are all different tactics. And जो बोल रहे थे कि हाँ, अभी बोले कि कांग्रेस ने मुस्लिम के लिए क्या किया. पहले तो बोल रहे थे कि नहीं, कांग्रेस हमेशा मुस्लिम्स को फेवर करती थी. तो ऐसे डिफरेंट स्टेटमेंट्स तो दोनों चीज नहीं हो सकती. कहने का मतलब ये हुआ कि एक तरफ तो मुस्लिम तुष्टीकरण और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों ने क्या किया. Exactly. So how can they both? So people are not fools. Everybody understands. तो ये बताएं डॉक्टर मल्होत्रा, प्लीज डू टेल अस. ये तो सैम पिट्रोडा साहब की बात हो गई. ही लिव्स इन न्यूयॉर्क. तो हमारे अधीर रंजन चौधरी साहब को क्या हो गया? उनको आज ये बोलने की क्या जरूरत थी कि पीपल इन द ईस्ट have mongoloid features? Why did he have to say that? I mean, I don't know. Maybe. As I said, there are two chances. Either he meant it in a normal way, or it is a script. Somebody is providing them the script. As in, perhaps after the elections, he will join the BJP, like so many other people. Yes. Dr. Malhotra, coming back to how you said that Prime Minister Modi talking that he was not against Islam. मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूँ, मैं मुसलमान समाज के खिलाफ नहीं हूँ. He says मुस्लिम बहनों से पूछिए ट्रिपल तलाक से उनका कितना फायदा हुआ, जस्टिस मिला, और उन्होंने तभी मालूम पड़ा कि प्राइम मिनिस्टर कितना सिंसियर है. जब मुस्लिम महिलाओं को आवास योजना में घर मिला तो उनको मालूम पड़ा सिंसियरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर. जब वैक्सीनेशन मिला, सिंसियरिटी वाज देयर. आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल जब किया तो सिंसियरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज देयर. मुस्लिम महिला, तो एज यू सेड, ये ही इज जस्टिफाइंग हिज डीड्स, सेइंग दैट ये सब हमने किया. मुस्लिम महिला
knows the sincerity of the Prime Minister. Now, how do you see that, Dr. Malhotra? See, ये सब बातें हैं because he is the one who has been saying कि these are the infiltrators, they are the terrorists, then they are the ones who is increasing the abadi because they are having so many children. So he is the one who talks anything at any moment. I think he should, whatever he talks, he should be consistent in his talking. Now regarding helping the Mahila, what about what about the Mahila of Manipur? They are not Mahila. उनको क्यों नहीं उनको सेव करने के लिए क्यों बात नहीं की? उनके लिए तो मतलब बात ही नहीं कर रहे हैं. तो जो भी होना चाहिए, जो भी सबके लिए तो सेम होना चाहिए. तो he changes his narrative as and when, as wherever he wants to. I think बीच में किसी और का भी वीडियो हो गया कि हम गोहत्या के ऊपर का बैन निकाल देंगे, ऐसे भी वीडियो आया था. So these people, BJP people, they change their narrative anytime and everything. और जो कुछ थोड़ा बहुत किया होगा उसके लिए बढ़ा के बता रहे हैं. अरे कांग्रेस के टाइम पे तो कितनी सारी बातें हो रही थी. So many things have been started during the Congress period, and people, I mean even the Muslim, they feel safe with the people of Congress. Because why? Because there is secularism. It is not only them. It is not only the minority Muslim. It is the Christians, the so many other people, OBC. They all feel safe with Mahavikas Aghadi. I'm talking about in Maharashtra. Everywhere else also. जी डॉक्टर मल्होत्रा, दूसरा है कि जितेंद्र आव्हाड जी ने कल स्टैटिस्टिक्स दे दिया कि इलेक्शन कमिश्नर्स रिपोर्ट हैज बीन different in two different dates. One when they on the first phase and the third phase, the same thing. They gave different statistics, increase in the percentage of voting. Now he said this is not acceptable. How can such a 3% के आसपास change किस प्रकार से हो सकता है? Same thing again was espoused by Sanjay Raut. फडणवीस जी का कहना है कि संकेत क्लियर है कि ये हारने वाले हैं, बहाना बना रहे. Now how do you see that? Election Commission this is the most unfortunate thing, and this is what we are most worried about. You know, tampering with the statistics, tampering with the votes. This is the most, you know, it is like BJP ने अभी ये ले hook or crook, they want to win, you know, and these are the things which are coming up, and we are definitely worried about these things. We are definitely जनते का call देखे तो we are not losing. In fact, महाराष्ट्र में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, जो महाविकास आघाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो रहा है. But then if they resort to all these tactics, then you know it's a very unfortunate thing, I would say. जी, but the only thing is, Dr. Malhotra, in terms of the actual election, why is it that one is not getting the feeling of an election? Or maybe it's just me. I don't know. I have covered so many elections before. I don't get that passion, that emotive feeling that usually comes with elections. Even during the state assembly elections, by the way, we were getting that feeling. There was a lot of passion, you know, all about campaigning. Could it be because of the heat, or what could it be because of? I think it is heat is definitely a big factor. I mean, we are in Mumbai and we don't feel that, but outside, even now we are going out for campaigning. It is hot. It is hot in Mumbai also. So there it is quite hot, and so that is definitely one reason. Of course, then there is the holiday season, so many people, you know, sometimes they go away, and also Dadapshahi ये भी बात है कि अरे why you came, we have told you not to come for voting or whatever, stay away. Things, so many tactics are used, so all those things are like, you know, could be making a Doctor. So out of the, sorry Pradeep, so out of the 10 seats that the Sharad Chandra Pawar NCP is fighting, how many do you expect to win? Around 7. 7 out of 10, at least Yes. 7. Yes. That would be stupendous. I mean, you would have blocked the BJP then. इसका मतलब बीजेपी को आप रोक देंगे यहीं महाराष्ट्र में. पवार साहब ने बताया है कि जो definitely they are expecting 30 to 35 total seats. 30 to 35 total seats out of 48. Yes, this is what पवार साहब has said. अगर 30 या 35, मैं कहता हूँ चलो 32 भी आ गए ही, तो मतलब बीजेपी को 9 सीट का नुकसान हो जाएगा. इसका मतलब ये हुआ महाराष्ट्र में. जी हो जाएगा. प्रदीप जी. बारामती, ओके जी, बारामती क्या आप कुछ बोल रहे हैं? बारामती में की जो फीलिंग जैसे आ रही है, दैट इज द रीजन, सबको पता चल रहा है. इसके लिए तो अजीत दादा भी थोड़े चिड़चिड़े हो गए हैं. सब लोग देख रहे हैं कि भाई अजीत दादा इस चिड़चिड़े क्यों हो रहे हैं.
जी करेक्ट है, लेकिन बट आई वी मस्ट अप्रिशिएट सुप्रिया सुले जी. शी वेंट टू Ajit Dada's house. Exactly. She took the blessings of Ajit Dada's mother. She said, "I've come to visit my kaki." And उन्होंने उनके पैर छुए, उनका आशीर्वाद दिया. इनफैक्ट अजीत दादा का भी आशीर्वाद लिया. और तो और छोड़िए. और अजीत दादा ने पहले बोला था कि डेफिनेटली आई विल नॉट मीट द कैंडिडेट. I think he had made the statement. Yes, but he met her. He met her and he also blessed her. So see, I have always said कि Supriyatai Pawar sahab, they are very classy. You know, they for them politics is a classy thing. Politics is a vaicharik fight. It is nothing low level politics. So you have to keep your like if we go for some sports event like in cricket, how the two captains they shake each other's hands. So that's the way it has to be. मोदी जी का कहना है कि देखो मेरा मिशन है विकसित भारत का सपने लेकर, और रिपोर्ट कार्ड है कि व्हाट आई हैव डन द 10 years of transformation. He says the Congress mission, the Congress India Alliance mission is mission cancel. Whatever I have done राष्ट्रहित में उसको उनको कैंसिल करना है. आर्टिकल 370 करे एब्रोगेशन वापस लेके आएंगे. राम मंदिर राहुल गांधी जी कमीशन बिठाएंगे वापस कोर्ट ऑर्डर को ओवरटर्न करने के लिए. CAA पवार साहब कह रहे हैं कि उसमें वी विल गोइंग टू प्रॉब्ली फाइंड सम जो चीज है विल फाइंड एंड रेक्टिफाइड. NRC पवार साहब रेक्टिफाइड. UAPA पवार साहब से रेक्टिफाइड. बोले कि जहां तक राष्ट्रहित में जो भी काम हमने किया है, India Alliance when they come to power with the mission is mission cancel. जो राष्ट्रहित में किया उस चीज को कैंसिल करो. डॉक्टर मल्होत्रा जी. See, they are using the word rectify. They are not using the word abolish. Rectify. If you rectify something, it is like you are improving something. तो जो भी है उसमें इम्प्रूवमेंट लाइक जो हिचेस होंगे उसको इम्प्रूवमेंट करने, इसके लिए कमिटियां बैठाएंगे, और जो भी जनहित के लिए ठीक है, जनहित को जो भी जनता को जो प्रॉब्लम आ रही है चीजों के लिए, तो वो उसको देख लेंगे. No, I don't think Congress or Rashtrapati Congress Party is so staunch in anything, for any ideas. They are always open. They always believe in discussion. And that is what they are always coming forward and saying कि okay, किसी भी बात पे डिस्कशन होनी चाहिए और जो बेस्ट है लोगों के लिए वो हम लोग आगे लाएंगे. I think this is what they have said. तो मैम यहाँ पर एक और चीज है, I don't know whether you would like to comment on this. आज संजय राउत साहब की एक स्टेटमेंट आई है. संजय राउत साहब is used to making these kind of statements. उन्होंने कहा है कि औरंगजेब का जन्म जो है वो गुजरात में हुआ, यानी जहां मोदी जी पैदा हुए, और औरंगजेब को हमने महाराष्ट्र में दफनाया. याद रख लीजिए. तो मोदी जी क्या है, ऐसा संजय राउत जी ने कहा है. Now would you like to comment on that, ma'am? I did. That's his personal remarks. I wouldn't like to go to the personal level criticism on the personal level. लोगों का क्या sentiment है? No, he said that if we in Maharashtra could not be defeated by Aurangzeb, who spent 27 years trying to conquer Maharashtra, who is Modi ji? That's what Sanjay Raut ji said. Now, I don't know why he said that, but he said that. It is a जो दड़पशाही वाली idea है उसको दफना देंगे. It is nothing personal. I mean, I wouldn't like to put it that way. But unless and until it is in retaliation to what Modi ji said. Pradeep ji just quoted that interview of Modi ji, where he said कि personally मैं व्यक्तिगत तौर पर उद्धव ठाकरे जी के बिल्कुल साथ खड़ा हूं. उनकी अगर कभी भी कोई मुसीबत हो मैं उनके साथ हूं. लेकिन क्योंकि बाला साहब ठाकरे के मेरे ऊपर इतने एहसान हैं कि वो ऋण में कभी चुका नहीं पाऊंगा, ऐसा मोदी जी ने कहा. लेकिन उद्धव जी कैसे उन लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं जो औरंगजेब की तारीफ कर रहे हैं, ऐसा मोदी जी ने कहा. तो perhaps it could be because of that. औरंगजेब की कौन तारीफ कर रहा है? Anyway, these are all the divide and rule tactics which Modi ji is very famous for. तो वो सब कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव ठाकरे शिवसेना, उनमें सब ये करने की कोशिश होती है उनकी. No, Rahul Gandhi ji, he says that Prime Minister Modi knows that he is losing. इसलिए उनके जो अच्छे दोस्त हैं अंबानी अडानी को अटैक करना शुरू कर दिया है. Now, do you think, because Modi ji did say that Rahul Gandhi चुप क्यों है,
Modi ji, Adani, Ambani क्या पैसे पहुंचाए ट्रक भर के. So how do you see that particular statement? Is it Rahul Gandhi right when he says that Modi ji attacking his friends because he's losing the battle? Yes, it could be possible because Modi ji now we see that how Modi ji changes the script. You know how BJP changes the script and suddenly talks from this to jumps. At least I'm very happy that I'm in a party where the ideas they believe in the ideas and they stick to their ideas. And I think Rahul Gandhi is also doing the same. Congress is doing the same. So it is a more stable, thoughtful, parties together. So this is what I think. Yes. You know, Muslim electorate, we have discussed this earlier also. How do you see the Maharashtra Muslim electorate? What is their reaction? Because there was some disgruntlement within the Congress that Naseem Khan was not given the ticket where Varsha Gaikwad ji has been. Now you have been visiting all these areas. You have been seeing the sentiments, because I saw the sentiment. The Muslims have forgotten it. They said we got nothing to do with it. We need to defeat the BJP. But tall leaders like Sharad Pawar Sahab, he is known for secular values. Rahul Gandhi ji and the entire Congress believes the pillars of secularism, the constitution, like Dharam Nirpekshta, secular ideas. पूरे MVA एक कैंडिडेट पूरे महाराष्ट्र में मुस्लिम नहीं है, सुरेना मल्होत्रा जी. Do you think there will be an impact? I see you visiting all these areas for the candidates, campaigning for them. How do you see the Muslim electorate reactions? No, I'm so surprised, and we were so encouraged that all the Muslims, wherever we have visited, they are all for Varsha Gaikwad ji. And it is not Varsha Gaikwad ji to hai, but it is the Mahavikas Aghadi, because they know that Congress has always been, helping the minorities, and even Sharad Pawar ji, secularism. So they know how BJP has always been putting them down. और जो दड़पशाही है, the Catholics, the Muslims, all of them are for Mahavikas Aghadi. There is no question about that. And in fact, Naseem Khan ji and Varsha Gaikwad ji, I think कल ही उनके उन्होंने बोले कि मेरी छोटी बहन है और मेरा फुल सपोर्ट रहेगा. वर्षा गायकवाड़ जी ने भी बोले कि मेरे फादर के टाइम से हम हमारे अच्छे घर के रिश्ते हैं. So as an elder brother, he is going to support. ये तो बात कही उन्होंने. ये क्या थोड़ी बहुत नाराजगी होती है, but they are all big leaders and they overcome all these things. Right. Yes. So in your opinion, ma'am, 7 out of 10 and 35 out of 48 in Maharashtra. Yes, 30 to 35, but yes, we wish for 35. And all over the country, ma'am, the BJP says BJP का 400 पार का नारा वापस आ गया है. बीच में 2 चरण के बाद कम हो गया था, अब तीसरे चरण के बाद दोबारा शुरू हो गया है. और साथ में जैसे जितेंद्र अवार्ड साहब ने कहा, जब अभी प्रदीप जी ने आपसे पूछा कि सडनली 11 दिन के बाद 6% बढ़ कैसे गई वोटिंग परसेंटेज जो है, तो पूरे देश में क्या होने वाला है मैम आपके मुताबिक? We are keeping the fingers crossed. We don't know what's going to happen. We have to fight all these things. But then, if it is a fair, I hope it is a fair voting. जो भी है, लोगों के मन में जो है, they should come forward. लोगों को जो चाहिए वो सरकार आनी चाहिए. That's the main thing. जी. There is constitutional freedom we have. Everybody. Well, but thank you very much for joining us, ma'am. And once again, we are very, very impressed, and we are delighted at the manner in which Supriya Sule ji has behaved. Yes, The way she has gone home to Ajit Dada Pawar's mother, taken her blessings, taken Ajit Dada Pawar's blessings. At all times, a smile on her face. Yes. At all times, you see, it's always a smile on her face. Never, never disheartened. Yes, if you have listened to her, that's Sankta Sabha last speech also. That was fantastic speech. And yes, and we are very proud of Supriya Sule ji. Definitely. Wonderful, absolutely wonderful. Keeping No up wonder with she's won the Best Parliamentarian Award so many times. Yes, Absolutely wonderful. certainly. Thank you, ma'am. Thank you very much. Great pleasure as always talking to you. Namaskar. Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai Bhavani, Jai Shivaji. Election season. Thank you, ma'am. Well, that's just about it for tonight's show. आज के show में सिर्फ इतना ही. Pradeep ji, so tomorrow is a very important date here. Tomorrow, the Supreme Court will rule on whether or not Arvind Kejriwal gets bail. अरविंद केजरीवाल जी की बेल एप्लीकेशन लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट के सामने. जस्टिस संजीव खन्ना साहब की बेंच है और वो 3 जज की बेंच है. वो तय करेगी कि इस इलेक्शन में, इस चुनाव में क्या अरविंद केजरीवाल जी को
बेल जमानत मिलेगी ताकि वो चुनाव प्रचार कर पाएं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है, उन्होंने पहले से ही एफिडेविट फाइल कर दिया है कि इलेक्शन कैंपेन करना कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। कुछ कहना चाहेंगे प्रदीप? But I think Justice Khanna has already made his views very clear. He says, I am for an interim bail for Arvind Kejriwal. So he's made his intention very clear, and he's always clear when he says that, and that's why he has to say, even though Enforcement Directorate is totally opposing the bail, the full might of the Enforcement Directorate is that Arvind Kejriwal should not be given bail. But I think when the court has made its intentions very clear after studying the case, it's not the first time it's coming before the courts and they have seen it. So I think in all this balance of the scales of justice, so Pradeep Justice ji, Khanna will give an interim bail to Arvind Kejriwal. Do remember he belongs to the same family as Justice H.R. Khanna. Yes, yes. He is from the same family. He cannot be intimidated. Yes, but there is one thing. In the case of Manish Sisodia, he had told the Enforcement Directorate, your case will not stand for even 2 minutes under cross-examination, and refused bail. So even that is there in front of us. So we don't really know what's going to happen tomorrow. No, but I think here he's made his very intention very clear. He's told that I am going to give him interim bail. Please give your... They said we are inclined to give interim bail. Yes, yes. They said that. So hopefully Arvind Kejriwal should be out. And in any event, the case is already over, Pradeep ji. The investigation is already over. All the facts that had to be collected or investigation that had to be done has already been done, and the Enforcement Directorate had said, we can't find the money trail because all the money has probably been spent. So what can they possibly gain by keeping Arvind Kejriwal in jail? I mean, he can be an under trial. He can always appear, continue appearing for interrogation, etc. You need to at least recover some amount of money. I mean, but they haven't. Not one rupee. Time. I mean, you haven't. आप संजय सिंह को डाल दिए, सिसोदिया को डाल दिए, अरविंद केजरीवाल को डाल दिए. सर 1 रुपया नहीं मिला. 1 रुपया. And where is the recovery? वो क्या नाम है उनका सर, वो जो BRS, वो जो के कविता जो है, उनसे भी 1 रुपया नहीं मिला सर. तो मतलब वो पैसे गए कहाँ? मतलब if you remember, it started with 1000 crores, 1000 करोड़, फिर 500 करोड़ पे आ गया, फिर 100 करोड़ पे आ गया, फिर 45 करोड़ पे आ गया. अभी क्या है मुझे मालूम नहीं है. Right now I don't know what the amount is. But that's just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग हमारे साथ रहे. And from Nation Now, प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. वंदे मातरम. और सब्सक्राइब जरूर करें साहब चैनल को. अभी आपने घंटी भी सुनी. जी हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को. बाकी सब करें या ना करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को देखें, अपने कमेंट भी भेजें. जो आपको कहना हो आप ज़रूर कहिए. एंड एज यू नो, वी ट्राई एंड गिव एवरीबडी as free a forum as possible. Except of course now and then we try to correct people on facts, but that is all part of the game. That is just about it from both Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को एक बार फिर जय सिया राम और हर हर महादेव. हर हर महादेव.